अच्छा, एज ऑफ वायबिलिटी कहीं आपको किसी अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट कहता है 22, और जो आरसीओजी के रिकमेंडेशंस हैं वो हैं 23+4। ठीक है, सो आप लोग अपने बुक के हिसाब से देखिएगा। 22 के बाद कोई भी अगर फीटस की एक्सपल्जन होती है या कुछ भी होता है तो हम उसको आईयूडी लेबल करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? एक्सपल्जन ऑफ द कॉन्सेप्टर फ्रॉम द मदर बिफोर द एज ऑफ वायबिलिटी, दैट इज 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, और एन एम्ब्रियो weighing 500 grams or less. अच्छा, तो ओवरऑल इंसिडेंस ऑफ miscarriages around 10 to 15%. The most common time during which the miscarriage can occur is between 8 and 13 weeks of pregnancy. Usually, once there is a heartbeat in the ultrasound, then the chances of miscarriages are very low. अच्छा, अब कॉजेज ऑफ मिसकैरेजेस क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेज ऑफ मिसकैरेजेस हो सकते हैं फीटल कॉजेज, मैटरनल कॉजेज और प्लेसेंटल कॉजेज। मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम इन द फीटस, और देयर इज सम मैटरनल प्रॉब्लम और प्लेसेंटल इश्यूज, देन these three things can lead to the miscarriages. So in 25% of the cases, the causes of miscarriages remains unknown. मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि किस वजह से मिसकैरेज हुआ है। ठीक है, जिसको हम आमतौर पे अंडर द हेडिंग ऑफ प्लेसेंटल कॉजेज लेके जाते हैं। अच्छा, अब फीटल कॉजेज में द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द मिसकैरेज इज द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, usually the chromosomal abnormalities account for 50 to 60% of the first trimester miscarriages. Usually chromosomal abnormalities becomes less frequent in the second trimester miscarriages. ठीक है, so first trimester miscarriages का fetal the most important cause will be chromosomal abnormalities. ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है? ट्राइसोमीज हो सकती हैं, और डाउन्स हो सकता है, एडवर्ड सिंड्रोम हो सकता है। इन सब की वजह से मिसकैरेज हो सकता है। ट्राइसोमीज हो सकती हैं, मोनोसोमी हो सकती है, ये सारे वो। अच्छा, अब structural abnormalities in fetus like neural tube defects, cleft lip, cleft palate, amniotic bands, caudal regression syndrome. So if there is some major structural abnormality in the fetus, that can also lead to the miscarriage. तो fetal causes में हमारे पास दो important cause है. The commonest cause is the chromosomal abnormalities, and the second less frequent cause is the structural abnormality in the fetus. So maternal causes are more commonly related to the second trimester miscarriages. ठीक है, जो भी मैटरनल कॉजेज होंगे ना, वो आमतौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस का कॉमनेस्ट कॉज कौन सा है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। तो maternal causes can lead to the recurrent or the single miscarriage. These causes can include general diseases of the mother like poorly controlled diabetes, poorly controlled hypertension, autoimmune diseases in the mother, uterine abnormalities like submucosal fibroids, and there is some structural abnormality in the uterus, hormonal insufficiencies. Certain autoimmune drugs can lead to the miscarriages like methotrexate वगैरह. So जनरल मैटरनल डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं जो कि मिसकैरेज करा सकती हैं? अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, renal diseases, malnutrition, maternal infections like typhoid, malaria, pyelonephritis, rubella, and the autoimmune diseases like SLE and the APLA. I'm so sorry, this is not S, this is APLA, antiphospholipid antibody syndrome. Okay, the uterine abnormalities, structural uterine abnormalities like double uterine diadelphys जिसको हम कहते हैं, septate uterus हो, it can also lead to recurrent miscarriages, bicornuate uterus, submucosal or intramural fibroid. Usually submucosal fibroid can lead to the miscarriages because these fibroids are inside the uterine cavity. उसके अलावा intrauterine adhesions, जिसको हम कहते हैं एशरमैन सिंड्रोम, साइनी की फॉर्मेशन इन द यूट्रस, दैट कैन आल्सो लीड टू द मिसकैरेजेस. कोई कुछ पूछना चाह रहा है? ओके, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस. सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस यूजुअली लीड्स टू सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस.
So yeah, this is the picture diagrammic representation of the weak cervix or incompetent cervix. So in first picture, you can see a normal cervix at the 16 weeks of the pregnancy, which is closed, and incompetence is cervix, which is open. Okay, so the internal os should be closed throughout during pregnancy. It should always be closed. So whenever there is a spontaneous dilatation of the cervix in the second trimester, it can lead to the miscarriage in the second trimester. Okay, then hormonal imbalances, polycystic ovarian disease. We know it's one of the more common cause of the subfertility. It can also lead to the recurrent miscarriages. Hypothyroidism, if it is not optimized. See, hypo and hyperthyroidism, if both these diseases are optimized during pregnancy, they cannot lead to the miscarriages. But if hypothyroidism and hyperthyroidism is uncontrolled and it is not controlled prior to pregnancy, it can lead to the miscarriages. Poorly controlled diabetes. It can also lead to the intrauterine death, or it can also lead to intrauterine death or recurrent miscarriages. Progesterone deficiency, we cannot actually estimate the progesterone deficiency, but it is said that it is one of the cause of the recurrent miscarriages. So that's why whenever there is a threatened miscarriages, or there is a previous history of recurrent miscarriages, so empirically we start with the progesterone therapy. So now we know the causes of the miscarriages. Usually the first trimester miscarriages are caused by the chromosomal abnormalities of the fetuses, and the second trimester miscarriages are usually caused by the maternal causes. Now there are different type of miscarriages: threatened miscarriage, inevitable miscarriage, incomplete, complete, induced or septic, missed, and the recurrent miscarriages. Okay, इनके जो नाम है ना, उन्हीं से आपको आइडिया हो जाता है कि ये मिसकैरेजेस किस किस वजह से हो रहा है. ठीक है, अच्छा देखो, थ्रेटेंड मिसकैरेज के नाम से पता चलता है देयर इज ओनली अ थ्रेट ऑफ मिसकैरेज. अगर आप लोग पिक्चर 1 देखें, सो babies inside the uterine cavity, the fetal heart rates are there is only a threat, there is a mild separation of the placenta from the uterus, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई, os is closed and the fetal heart rate is there, so there is only a threat of miscarriage. ठीक है, अच्छा inevitable का क्या मतलब है? inevitable का मतलब है कि we cannot stop that miscarriage to happen. ठीक है, मतलब os is open, see, sorry, os is open and the this miscarriage is going to happen, we cannot stop this miscarriage. ठीक है, फिर आ जाते हैं इनकम्प्लीट मिसकैरेज. इनकम्प्लीट मिसकैरेज का मतलब है कि most of the fetal parts and the placental part has been expelled and few of the retained products of conception are inside the uterine cavity. And then there is a complete miscarriage. Complete miscarriage का मतलब कि without any intervention os was open and the जो miscarriage था वो हो गया. अच्छा, then there is a missed miscarriage. Missed miscarriage का मतलब है कि the dead fetus is inside the uterine cavity. अच्छा, अब जैसे आप लोगों को मैंने पीछे पिक्चर दिखाई है, उसी हिसाब से अब हम एक मिसकैरेज को डिस्कस कर लेंगे. So threatened miscarriage. Threatened miscarriages, there is the bleeding in the choriodecidual space, but this is not sufficient to kill the embryo. जैसे मैंने आपको बताया कि there is a minimum placental separation that leads to the bleeding. Usually the bleeding is painless. It is very small in amount, bright red, or later on changes to the brownish in color. On examination, the uterus is appropriate for the size of the gestational age. मतलब अगर 8 week size का बेबी है तो यूट्रस का साइज भी 8 weeks होगा, 10 weeks होगा, 12 weeks होगा. और एक और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, सर्विक्स इज क्लोज्ड. एक तो फीटल अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको फीटल हार्ट साउंड जरूर मिलेंगे, और दूसरा सर्विक्स क्लोज्ड होगा. More than 95% of the women with the threatened miscarriage will have the good prognosis. If bright red blood loss continues and increases in amount, then it can progress to the inevitable or incomplete miscarriage. ठीक है, अगर threatened miscarriage का एक एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग हुआ, पेनलेस स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है, लेटर ऑन वो सबसाइड हो जाती है, तो प्रेगनेंसी आउटकम इज गुड.
अच्छा जी, अब थ्रेटन्ड मिसकैरेज का हम मैनेज कैसे करते हैं? The ultrasound examination we do for the confirmation of the viability of pregnancy. Usually ultrasound detects the cardiac activity at around 6 to 7 weeks of pregnancy. अच्छा, दो तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं बेटे, एक होता है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड और एक होता है ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड. ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की रेजोल्यूशन इज मोर गुड एज कंपेयर टू द ट्रांस एब्डोमिनल. ठीक है. Usually no definitive treatment is available for these patients. It's just the reassurance and the pregnancy support. जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऐसे पेशेंट्स को हम प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट देते हैं. ठीक है. Patient is asked to do bed rest, avoids intimate contact, and then progesterone contact, progesterone support. So usually जहाँ भी threatened miscarriage होता है, the outcome of the pregnancy is good. Usually 95% of the patient की जो प्रेगनेंसी होती है वो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन आगे जाती है. अच्छा, अब दूसरा हमारे पास है इनएविटेबल मिसकैरेज. इनएविटेबल मिसकैरेज के नाम से आपको पता चल रहा है कि इनएविटेबल मिसकैरेज का मतलब है कि दिस मिसकैरेज इज बाउंड टू हैपन, वी कैन नॉट स्टॉप इट. ठीक है. व्हेनेवर द, देखो थ्रेटन्ड और इनएविटेबल में फर्क क्या है सर्वाइकल लॉस का. ठीक है. जहां भी सर्विक्स ओपन हो जाएगी वहां पे वो इनएविटेबल हो जाएगा, जहां भी सर्विक्स क्लोज्ड होगी वहां पर वो थ्रेटेंड होगा. Okay, so threatened miscarriage becomes inevitable when cervix dilates and the process of miscarriage has begun. It is characterized by the fresh red vaginal bleeding, and it is also associated with the lower abdominal pain. Bleeding may be heavy with the clots. Whenever there is the cervix is open, the bleeding will be more. So on examination, vagina may be full of clots, uterus may be firm, tender, and smaller than the gestational age. इसमें smaller than gestational age क्यों है? क्योंकि पेशेंट ब्लीड कर रहा है. ब्लीड कर रहा है तो उसकी वजह से कुछ प्लेसेंटल टिश्यू और ये सारा कुछ बाहर एक्सपेल हुआ होगा, जिसकी वजह से the size of the uterus is less than the estimated gestational age. So cervical loss is open and you can feel the products of conception inside the uterine cavity. तो जैसे हम बता रहे थे कि जी आपका जो थ्रेटेंड मिसकैरेज है जिसका डायग्नोसिस में हम अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, बट इन द इनएविटेबल मिसकैरेज द डायग्नोसिस इज ऑलवेज क्लिनिकल. क्लिनिकल डायग्नोसिस का क्या मतलब? आपने पेशेंट को एग्जामिन किया, आपने उसका बायोमैनुअल एग्जामिनेशन किया जिसके अंदर आपको ऑस ओपन मिला है. वंस द ऑस इज ओपन, nothing can be done to prevent that miscarriage. So the management of the inevitable miscarriage is we need to evacuate the uterus. Suction curettage is done before the 12 weeks of pregnancy, and after 12 weeks the fetus needs to be expelled first, then curettage. Expulsion may require augmentation with oxytocin. So मतलब ये कि if less than 12 weeks का pregnancy है, when the baby is very small, so we can offer two things. Either we can offer manual vacuum aspiration, जिसको हम MVA कहते हैं, which is recommended nowadays, and the second thing is suction curettage. ठीक है. अच्छा, दूसरा आफ्टर 12 वीक्स के बाद द फीटस इज लिटिल बिट लार्जर. ठीक है. तो जब तक के फीटस एक्सपेल नहीं हो जाता तब तक हम डीएनए ऑफर नहीं करते. सो जहां भी हम अगर आप डीएनए ऑफर कर रहे हैं तो इट शुड ऑलवेज बी डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया. यूजुअली एमवी अगर आप ऑफर कर रहे होते हैं तो वो लोकल एनेस्थीसिया में होता है. इफ द ब्लीडिंग इज वेरी हैवी देन द ergometrine 500 micrograms should be given IM. If the patient is RH negative, then NT-D should be given. If the patient is RH negative and the husband is RH positive, so we will offer NT-D to prevent the hemolytic disease of the newborn later on in the pregnancy. अच्छा, incomplete miscarriage क्या है? When the product of conceptions are partly expelled and partly retained inside the uterine cavity. ठीक है. देखो इसके नाम से हमें पता चल रहा है इनकम्प्लीट मतलब कि कंप्लीट मिसकैरेज नहीं हुआ है. हाफ ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शंस आर एक्सपेल्ड एंड हाफ ऑफ द content of the fetuses inside the uterine cavity. Patient usually presents with the heavy fresh bleeding with passage of the products of conception along with the clots. The bleeding is associated with the severe lower abdominal pain, and the patient may present in the state of shock if she is bleeding heavily. Hypovolemic shock.
So if the patient is bleeding heavily, then on examination, patient will be hypotensive, tachycardic, she will look pale. Uterus will be smaller than the gestational age. Vagina will be full of blood clots. Cervical os is open, and you can feel the retained products of conception through the open os. So diagnosis is clinical, and in these patients, no ultrasound is required for the confirmation of the diagnosis. So if the patient is in hypovolemic shock, we first of all we stabilize the patient by doing airway breathing circulation, and we will offer her a plasma expanders or the blood, whatever is easily available. Then the control of bleeding by injection ergometrin, then evacuation of the uterus under general anesthesia once the patient is stabilized. Again, if the patient is Rh negative and the husband is Rh positive, then NTD should be offered to this patient. So now the complete miscarriage. So complete miscarriage is the one in which all the products of conception have been expelled. Patient is usually pain-free. There is only slight bleeding of fresh vaginal bleeding or the brownish spotting. History में patient बताते हैं कि जी there was a heavy vaginal bleeding at home. There was an abdominal pain associated with that bleeding. On examination, vagina may be empty or may have old blood clots. Cervical os closed hogi. Uterus will be of normal size because all the fetal content has been expelled spontaneously. So the diagnosis is confirmed on the ultrasound, which shows the empty uterus and no RPOCs. Because we cannot assess that whether the uterus is complete or completely all the fetal content is completely expelled or not, until unless we don't do the ultrasound. So management of the complete miscarriages: once the patient is pain-free and the bleeding subsides, no further treatment is needed. Patient should be followed for irregular vaginal bleeding. If presents with the bleeding or pain, then evacuation should be done only if the ultrasound shows that there are the retail product of conception. And in any case, when there is husband is Rh positive and the wife is Rh negative, Rh NTD prophylaxis should be given to this patient. So now the missed miscarriage. Missed miscarriage is defined as the intrauterine fetal demise before the 24 weeks of gestation and uterus fails to expel it. It presents with the regression of the signs and symptoms of pregnancy. Whenever the fetus is growing well inside the uterine cavity, we know because of the high progesterone levels, the patient experiences so much of nausea, vomiting, indigestion. So when these symptoms and signs of the pregnancies are regressing, then we will think about the miscarriage. Usually the fundal height does not correspond to the gestational age. Like the fetal is of 20 week size, और जब आप उसको examine कर रहे हैं तो वो आपको 14-16 week size का लग रहा है. There may be some sort of vaginal bleeding, brownish in color. So on examination, there will be firm uterus, smaller, the size of the uterus will be smaller than the gestational age. Cervical os is closed. Diagnosis is by the clinical, and the ultrasound which shows dead fetus inside the uterine cavity. Very, very rare complication of the miscarriage is the hypofibrinogenemia that can lead to the coagulation defects. But that only happens if the retained products of conception stayed inside the uterine cavity for more than 4 weeks. So this is the picture of a miscarriage. So you can see the fetus was the 18 weeks, but on examination, the size of the uterine cavity is just 14 weeks. So इस वजह से क्योंकि ये the gestational, the size of the uterus is not corresponding to the uterine size. So we think about the miscarriage and we offer the ultrasound. So management of the miscarriage is you usually counsel the couple regarding the diagnosis.
Both can be done, conservative management or the active management. In conservative management, that you don't do anything active, you just ask the patient to wait at home. Usually spontaneously, the fetus expels in next 2 to 3 weeks, but there is a risk of DIC if not expelled in more than 4 weeks. And the active management includes DNE that may need priming of the cervix with the prostaglandins, and once the cervical dilatation has occurred, then we offer the DNE. अच्छा जी, अब आ जाता है induced miscarriage or the septic miscarriage. I'm so sorry कि abortion word is used here, but this is an obsolete term. The new term is the miscarriage. So uterine cavity may become infected before or after the miscarriage due to the passage of the unsterilized instrument in induced miscarriage or by the retained pieces. देखो इसके नाम से हमें पता चल रहा है ना, यूजुअली सेप्टिक मिसकैरेजेस कब होंगे, जब वो जब आप उनको इंड्यूस करवाते हैं, लाइक अनवांटेड प्रेगनेंसी है, इलिजिटिमेट बेबी है, पेशेंट वांट्स टू गेट रिड ऑफ दैट प्रेगनेंसी, तो यूजुअली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी we don't offer miscarriage of a live fetus. So ऐसे पेशेंट्स कहाँ जाते हैं, बैकडोर क्लिनिक्स पे जाते हैं जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन का कोई बहुत प्रॉपर सिस्टम नहीं होता. तो जहाँ भी unsterilized instruments are used for induced miscarriage, they can lead to the septic miscarriage. There may be a little vaginal bleeding and few uterine contractions. Patient may present with the high-grade fever, very foul-smelling vaginal discharge, and severe abdominal pain. So on examination, patient will be febrile, tachycardia. Because of the sepsis, patient can lead to the patient and present with the hypotension. And on examination, there will be lower abdominal tenderness, guarding and rigidity in the case of peritonitis. Uterine tenderness while examination, foul smelling vaginal discharge, cervical os can be closed, and the cervical excitation may be present. Cervical excitation का मतलब क्या है कि when you touch the cervix and you move it, the patient experiences extreme pain. This is called as the cervical excitation. Usually cervical excitation दो चीजों में होती है, आमतौर पे ectopic pregnancy में, और जहाँ भी ये septic miscarriage या PID हो, acute PID हो वहाँ पर. So diagnosis of the septic or induced miscarriage is clinical and as well as by the ultrasound. Patient gives history of the induced miscarriage at some peripheral clinic, followed by the fever, vaginal discharge, and bleeding. So when adnexas are involved, like when the infection has been disseminated, it can lead to the pelvic abscess. Ascites may be present in cases with the bowel perforation. So what will be the management of the induced miscarriage? Systemic antibiotic is the first line of treatment. देखो जैसे हमारे पास incomplete miscarriage आ रहा था, patient बहुत heavily breathe कर रहा है, तो हम उसको once patient is stabilized, we immediately move that patient for the evacuation of the uterus. But in the septic miscarriage, we cannot offer DNE or any intervention until and unless antibiotic is given. The recommended triple regime is ampicillin combined with the metronidazole and the gentamicin. ठीक है, तो ये कवर करता है एरोब्स एंड नॉन एनारोब सारे इन्फेक्शंस को. सो ये तीन कंबाइंड हम कहते हैं ट्रिपल regime. So evacuation of the uterus is usually done after 12 to 24 hours of antibiotic cover. क्यों हम देते हैं, देखो इसलिए एंटीबायोटिक कवर देना इसलिए जरूरी है प्रायर टू मिसकैरेज, जहाँ भी सेप्टिक मिसकैरेज है, क्योंकि जब हम एवैक्यूएट करेंगे यूट्रस को तो क्या होगा, वहाँ पे ब्लड वेसल्स ओपन होंगी. अगर पेशेंट ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और हमने उनके साइनस चैनल्स ओपन कर दिए हैं, तो वो जो इन्फेक्शन है वो डिसमिनेट कर जाएगा. ठीक है, तो पेशेंट can go into the sepsis. So isliye prior to going for the evacuation, we offer antibiotic cover first. If the patient is stable enough, we can wait for 24 hours. If the patient is not very stable, for at least 12 hours of giving antibiotics, we will offer the evacuation. So evacuation should be done with extreme caution because of the risk of perforation. जहाँ भी हम evacuation करते हैं वहाँ पे risk of perforation is always there. But लेकिन जहाँ पे infected tissue होगा ना, वहाँ पे ज्यादा chances होंगे उसके perforation के. So in severe cases with endotoxic shock, management is best carried out in the ICU.
ठीक है, मतलब अगर पेशेंट सेप्सिस में है, सो यू कैन नॉट डील दैट पेशेंट इन द ward or in the HQ setting. You need to admit that patient into the ICU for the sepsis management. So जहाँ हमें मालूम है जहाँ भी सेप्सिस का पेशेंट होता है वहाँ पे सबसे पहले उसका जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हम देख रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे फिर पेशेंट की सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस हैं लाइक CBC, यूरिन DR, कोagulation प्रोफाइल, यूरिया क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द पैन कल्चर्स। आई एम सो सॉरी कि आई हैव नॉट मेंशन पैन कल्चर्स हियर। पैन कल्चर्स का क्या मतलब है? यूरिन कल्चर, ब्लड कल्चर एंड द हाई vaginal swab for culture and sensitivity, ठीक है। We know because of the sepsis patient can go into the DIC, so blood transfusion may also be required in such cases. अच्छा जी, अब आ जाता है हमारे पास रिकरेंट मिसकैरेजेस। देखो रिकरेंट मिसकैरेजेस की डेफिनेशन क्या है? व्हेन देयर आर कंसेक्यूटिवली 3 spontaneous miscarriages, ठीक है, this is called as the recurrent miscarriages. It usually the incidence is 1 in 100 to 200 women. Etiology of the recurrent miscarriages includes anatomical, endocrine, immunological and the systemic disorders. The commonest cause of the recurrent miscarriage is the immunological cause, ठीक है, and the treatment is always directed towards the cause of that recurrent miscarriages. अच्छा, अगर यूजुअली अगर किसी पेशेंट को भी रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो हम कैसे उसको इवैल्यूएट करते हैं? हम लिखा है हमने कि ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द कॉज, सो देयर आर द सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस दैट वी ऑफर टू द पेशेंट आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव मिसकैरेज, और फिर जो भी हमारे पास कॉज आ जाता है तो अकॉर्डिंग टू दैट कॉज वी ट्रीट दैट पेशेंट. यूजुअली द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द रिकरेंट मिसकैरेज इज द ऑटोइम्यून कॉजेज लाइक एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, और द पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस है, SLE है, तो दीज पेशेंट्स आर एट रिस्क ऑफ रिकरेंट मिसकैरेजेस. तो फिर इन पेशेंट्स को जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसमें जो भी कॉज आता है उसको फिर अकॉर्डिंगली डील करते हैं. So the complications of miscarriages can be hemorrhage. अगर patient heavily bleed कर रहा है तो वो patient can lead to the hemorrhage. Infection, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया सेप्टिक मिसकैरेज में हो सकता है, या अगर पेशेंट मिसकैरेज के साथ आया है और आपने प्रॉपर स्टेरिलाइज टेक्निक्स यूज नहीं की हैं तो पेशेंट कैन गो इनटू दैट मिसकैरेज कैन लीड टू द इन्फेक्शन एंड लेटर ऑन पेशेंट कैन गो इनटू द सेप्सिस. ट्रॉमा किस चीज का हो सकता है? ट्रॉमा हो सकता है यूट्राइन परफोरेशन हो सकती है, जब आप इवैक्यूएशन कर रहे हैं उस टाइम के ऊपर सर्वाइकल ट्रॉमा हो सकता है, हेमरेज हो सकता है उसी टाइम पे ड्यू टू ट्रॉमा. द पेशेंट कैन लीड टू द DIC. यूजुअली पेशेंट DIC में कौन से पेशेंट्स जाएंगे? जिनका मिस्ड मिसकैरेज है, जो कि मोर देन 4 वीक्स तक इनसाइड द यूट्राइन कैविटी रहा, अनडायग्नोज्ड रहा, ट्रीट नहीं किया गया, या वो पेशेंट जो कि सेप्टिक होंगे. Because of the sepsis, patient can lead, because of the sepsis and because of the hemorrhage, the patient can lead to the renal failure. Usually, हमें आप लोगों को सुना होगा ATM, acute tubular necrosis, ठीक है, that can secondary to the heavy bleeding or because of the sepsis. So अगर और अगर सेप्टिक मिसकैरेज है तो उसकी वजह से पेशेंट कैन हैव सबफर्टिलिटी एंड क्रॉनिक पेल्विक पेन. क्यों? क्योंकि देखो जो भी असेंडिंग इन्फेक्शन होगा जो यूट्रस से जाएगा वो अल्टीमेटली जो कॉर्नुआ से फेलोपियन ट्यूब्स में जाएगा. जब वो फेलोपियन ट्यूब्स में जाएगा तो वहां पे जाके जो सीलाज हैं वो उनको डैमेज करेगा. पेशेंट को पायोसेल्पिंग्स हो सकता है, हाइड्रोसेल्पिंग्स हो सकता है. पायोसेल्पिंग्स का मतलब देयर इज अ पस इन द फेलोपियन ट्यूब्स. हाइड्रोसेल्पिंग्स का मतलब देयर इज अ फ्लूइड इन द फेलोपियन ट्यूब्स. जहां पे फेलोपियन ट्यूब्स डैमेज हो जाएंगी तो पेशेंट can be subfertile. And the chronic pelvic pain because of this infection, patient को chronic pelvic pain persist करेगा, always lower abdominal pain associated with periods and it cannot be associated with periods, ठीक है. अच्छा, जहां भी आपके पास पेशेंट आती है, यंग पेशेंट है, ओवरड्यू है, एब्डोमिनल पेन है, ब्लीडिंग है, आपके जहन में ये सारे कॉजेज आने चाहिए, ठीक है. द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द मिसकैरेज, सबसे पहले कौन सा आता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी आ सकता है, हाइड्रेटिफॉर्म मोल हो सकता है, सर्वाइकल पॉलिप हो सकता है, सर्वाइकल कार्सिनोमा हो सकता है, पोस्ट कॉइटल टियर हो सकता है. इन सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस को हमने कैसे रूल आउट करेंगे कि द कॉज ऑफ ब्लीडिंग क्या है,
cause of abdominal pain क्या है, by doing the clinical examination and by doing the अल्ट्रासाउंड. जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो वहां पे हमें पता चल जाएगा जब हम अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो देयर इज नथिंग इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, और जो भी हमें फीटस या जो भी हमें सैक नजर आएगा, जेस्टेशनल सैक नजर आएगा, वो आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी नजर आएगा. हाइड्रेटिव फॉर्म होल होगा तो हमें यूट्राइन कैविटी के अंदर हमें कोई फीटस नजर नहीं आएगा. अल्ट्रासाउंड के ऊपर स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस आएगा या फिर आपको ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स फील होंगे और कोई फीटस नजर नहीं आएगा. अगर सर्वाइकल पॉलिप होगा तो जब आप पेशेंट को एग्जामिन कर रहे होंगे पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन से यू कैन आइडेंटिफाई द सर्वाइकल पॉलिप, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर अ लाइव फीटस नजर आएगा. सर्वाइकल कार्सिनोमा होगा तो वो भी आपको जब आप पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे तो उसके साथ आपको एविडेंट हो जाएगा कि सर्विक्स को देख के कि सर्विक्स इज ईटन अप और देयर इज अ सर्वाइकल ग्रोथ, सो यू कैन डिफरेंशिएट इट. पोस्ट क्वाइटल टीयर होगा, यूजुअली पेशेंट हिस्ट्री देगा कि आफ्टर क्वाइटस आई हैव स्टार्टेड ब्लीडिंग. एग्जामिनेशन के ऊपर यू कैन आइडेंटिफाई द टीयर. सो अब अगर आप ये, दिस इज अ सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. आप लोगों को वैसे तो बेटे जो जितने भी मिसकैरेजेस की टाइप्स है ना, उसी वही आपको इसको डिफाइन करने में बहुत इजी है. जैसे अगर किसी भी पेशेंट का थ्रेटेंड मिसकैरेज है, थ्रेटेंड मिसकैरेज क्या है कि लाइव फीटस है, देयर ऑस क्लोज्ड है और देयर इज ओनली अ थ्रेट ऑफ मिसकैरेज, ठीक है, एंड देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग. तो यूट्राइन साइज विल बी एप्रोप्रिएट विद द जेस्टेशनल एज, cervix will be closed, fetal heart sounds will be present on ultrasound. Inevitable miscarriage का मतलब है inevitable का that miscarriage is bound to happen. इसके अंदर क्या है, cervix will be open, ठीक है, uterine size will be normal, ठीक है, fetal heart may be present or may be absent. तो अब हमें पता चल गया threatened और inevitable में क्या फर्क है, cervix का open होगा और close होगा. Incomplete miscarriage में क्या है, the uterine size is less than the gestational age, the cervix is open and the fetal heart rate are absent, ठीक है. Uterine size reduced क्यों है, because half of the conceptus has been expelled and half is inside the uterine cavity, so that's why the uterine size is reduced than the gestational age. अच्छा जी, कंप्लीट मिसकैरेज क्या है? कंप्लीट मिसकैरेज क्या है कि होल ऑफ द कंसेप्टस हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्राइन साइज, ठीक है. तो जो अगर पेशेंट का जेस्टेशनल एज है 10 वीक साइज की, तो आप उसको जब बायोमैनुअल एग्जामिनेशन करेंगे तो साइज ऑफ द यूट्रस आपको बिल्कुल नॉर्मल साइज के लगेगा, मतलब 10 वीक साइज के ऊपर आपको 6 वीक साइज का यूट्रस मिलेगा. सर्विक्स क्लोज होगी और फीटल हार्ट साउंड्स एब्सेंट होंगे. अच्छा, जहाँ पे भी लिखा हो फीटल हार्ट साउंड, सो फीटल हार्ट साउंड विल ओनली बी चेक्ड ऑन द अल्ट्रासाउंड. अच्छा जी, मिसकैरेज में साइज ऑफ द यूट्रस विल बी रिड्यूस्ड, मतलब ये कि द साइज ऑफ द साइज ऑफ द यूट्रस विल बी लेस देन द जेस्टेशनल एज. Cervix will be closed and the fetal heart rate will not